Welcome everyone. Uh, Welcome to the post-contest discussion of Codeforces round 849-44. So we'll explain the ABC question first. So we can start. Hello, Sub. स्क्रीन विजिबल है हाँ visible है. okay so first problem is code forces checking. Like we have given character and we have to check whether the character lies in code forces or not. So it is very simple. Like first we declare a string s code forces, and then we enter a character str. Then we will iterate through entire string s like code forces, and if the character is found in the string s, then we will set the flag as 1, and if flag is 1, then we will print yes, else no. Now move to second question. The second question is following this directions, and in this we have given that for, we have given a string in which consists only u, d, r, and l, and u for upward, d for down, and right, r for right, and l for left. We have to check whether v passes through 1 comma 1 or not. We are starting from 0 to 0 comma 0. So first we will input the string and take variable x is equal to 0 and y is equal to 0, and then we will iterate over whole string. Then if we will get r, then we will increment x by 1, and similarly if we get l, then we will decrement x. Like if we are going towards positive x direction, then we are incrementing x, and if you are going to minus x direction, then we are decrementing x. Similarly, if you are moving upward, then we are incrementing y, and similarly for downward, y minus minus. We can write this line. I have written repeated 4 times, but we can write at one time. So at any position, if we get x barabar x is equal to 1 and y is equal to 1, then we will stop there and set the flag as 1. And if the flag is 1, then we will print yes or and else no. Now move to the third question: prepend and append. In this we also have given a string, and like let's understand the question first. Like for example, we have given a binary string, then we can perform this operation many times, at 0 time. Like either we append 0 at beginning and 1 at the end of the string, or append 1 at beginning and append 0 at the end. So in this we have given a string, and we have to find that what is the length of the shortest possible node. What could be started with, like from like if we remove 1 and 0 from or 0 and 1 from beginning and end, then what is the minimum string we will obtain? We have to find out that what is the length of that string. So let's understand. Like we will input the string and calculate the length of the string, and first we will mark the size of the string in answer, and we will took two variables, I barabar 0 and j equal to size minus 1, and we will iterate from forward and backward of the string from both sides. And if we are getting 0 and 1, means in the beginning we get 0,
and in the last of the string we get 1, then we will decrement the answer by 2, like one letter from beginning and one from last. And similarly, if we get 1 in beginning and 0 in last, we will do the same operation. And if at any position this does not follow, then we will break, and answer will be printed. Anyone has doubt? Okay, I guess no. Okay, I'll start with the question now. Okay. ओके हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें गिवन स्ट्रिंग को दो स्ट्रिंग में बांटना है ताकि नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स दोनों इसमें दोनों स्ट्रिंग में जितना डिफरेंट कैरेक्टर्स होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल हो। जैसे कि पहला स्ट्रिंग देखते हैं। इसमें ए है, दोनों को अगर दो स्ट्रिंग बना दे इसको ए एंड ए, तो दोनों स्ट्रिंग में एक एक वर्ड हो जाएगा, तो टोटल वर्ड 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या क्या कि लाइक हर इंडेक्स के लिए हर इंडेक्स पे सोच लिया कि मैं इस इंडेक्स पे दोनों स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहा हूँ और उसको कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि एक टेस्ट केस देखते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी सी, ओके, ए बी सी डी। हाँ, तो इसको मैं पहले ट्राई करूँगा इस इंडेक्स पे डिवाइड करने का। इस इंडेक्स पे डिवाइड करने पे इस स्ट्रिंग में मिलेगा एक कैरेक्टर और इस स्ट्रिंग में मिलेगा ए और 3 कैरेक्टर, तो टोटल कैरेक्टर होगा 4, मतलब टोटल वैल्यू हो गया हमारा 4। अगर इस इंडेक्स पे डिवाइड किया तो मेरा होगा यहाँ पे 2 कैरेक्टर होगा, यहाँ पे होगा एक 4 ए बी सी डी 4, इधर यहाँ पे 4 ही होगा, सॉरी 4 होगा और ये टोटल होगा 5। एंड यहाँ पे भी 2 कैरेक्टर इधर हो गया और 2 कैरेक्टर इधर हो गया, तो 2,4 इज इक्वल टू 6। इस इंडेक्स पे डिवाइड करने से इधर 3 कैरेक्टर हो गया, इधर 4 कैरेक्टर हो गया, तो दैट इज 3 + 4 इक्वल टू 7। एंड इस कैरेक्टर पे डिवाइड करने से फिर से 3 + 3 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो इधर भी डिवाइड करने से मिलेगा 2 + 3 5, तो मैक्सिमम मिला हमें 7। तो किस कैरेक्टर पे डिवाइड करने से मिला, इस कैरेक्टर यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर इंडेक्स पे जाके देख रहा हूँ कि इस साइड मेरा कितना डिफरेंट कैरेक्टर्स है और इस साइड कितना डिफरेंट कैरेक्टर्स है। उसके लिए क्या किया मैंने, स्टार्टिंग में ही मैं हर एक इंडेक्स के लिए उस तक कितना मैं कैरेक्टर ला चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पे डी मिला है मुझे, इस कैरेक्टर तक सी मिला है, डी एन सी मिला है, इस कैरेक्टर बी सी डी मिला है, तो कितना डिफरेंट कैरेक्टर्स कितना कैरेक्टर्स मिल चुका है वो मैंने एक फैक्टर में स्टोर कर लिया। कोड दिखाता हूँ, ये रहा। अब साफिक्स सम की तरह, तो मैं क्या किया, हर इंडेक्स के लिए पहले तो मैंने क्या बना लिया, साफिक्स वेक्टर बना लिया n×26 साइज का, ताकि मैं हर मतलब हर कैरेक्टर के लिए स्टोर कर सकूँ। जैसे कि अगर एक इंडेक्स पे ए आया तो इधर उसका लाइक ए में प्लस प्लस हो जाएगा और उसका नेक्स्ट में ये साफिक्स ऐड हो जाएगा। तो क्या देन जब इस इंडेक्स का कैलकुलेट कर रहा हूँ तो तब भी मैं प्रेफिक्स को ले रहा हूँ और देख रहा हूँ प्रेफिक्स में कितना कैरेक्टर्स है, मतलब 26 में इटरेट करके
कितना कैरेक्टर्स मुझे मिला, लाइक इस काउंट वन प्रेफिक्स में कितना कैरेक्टर्स आया और सफिक्स में मतलब कितना कैरेक्टर्स आया दिखा, और दोनों को प्लस करके देख ले और उसका मैक्सिमम आंसर, मैक्सिमम काउंटिंग उसका आंसर हो गया। तो इतना ही था डी, ब्रूट फोर्स की तरह ही था। ये देखते हैं। अच्छा, ई में क्या था कि हमें एक एरे दिया हुआ था पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स का, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, -10^9 से 10^1 तक कुछ भी नंबर हो सकता है। तो हम उसमें क्या कर सकते थे कि मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव इंडेक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है AI एंड AI+1 को दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द निकालना था। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि इसमें -1 -1 -1 है, तो बेसिकली -1 -1 -1, तो इन दोनों को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस इंडेक्स के लिए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, तो 1 1 हो गया, ये -1 हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 2 -1 = 1। तो ऐसे ही इसके लिए भी, इसके लिए ये -5 और 0 को चूज करेंगे, तो 5 एंड -0 = 0, तो सम मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें भी सेम, इन इन ये दोनों चूज करेंगे तो हो जाएगा आंसर। अब क्या कर सकते हैं, हाँ, तो प्रॉब्लम कहाँ रहेगा, लाइक ऐसे तो डायरेक्ट मतलब इसको एक इंडेक्स पे जाएंगे, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इंडेक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर नेगेटिव मिला तो ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि -4 -5 -6 आया, तो इसमें चूज करना मुश्किल हो जाता है कि मैं इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ या फिर इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ। तो आ, तो इसमें तो डायरेक्ट बेनिफिट दिख रहा है हमें, तो क्या करेंगे, हम लेतर वालों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को माइनस की तरह रख देंगे। तो ऐसा ही होगा कि हमें स्मॉलेस्ट को नेगेटिव रखना है, उतना तो पता चल गया, हमें स्मॉलेस्ट में नेगेटिव रखना है, बाकी सब में जितना हो सके पॉजिटिव देना है। अब बाकी बात हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ रहा तो क्या होगा। देखते हैं कुछ एक एग्जांपल। 4 -5 -5 6 -7 +7 देता हूँ, यहाँ पे -8 दे देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो इसके लिए हमें लग सकता है कि लाइक हमेशा एक माइनस आएगा ही, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, माइनस को प्रोपागेट कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे 4 है, ये 5 और 6 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 -6 हो गया, यहाँ पे 7 ही रहा, यहाँ पे -8 रहा, -8। तो ऐसे ही इन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इस बार, तो यहाँ पे 6 रहेगा और -7 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि -7 और -8 को माइनस से मल्टीप्लाई करने से 7 8 हो जा रहा है, तो माइनस हट ही गया एकदम। तो ये तो कॉन्फर्म हो गया कि अगर कुछ भी लाइक निगेटिव मिले, उन लोगों को हम झुंड बना सकते हैं, मतलब एक झुंड में लाकर मतलब प्रोपागेट करके सबको एक ही जगह ला सकते हैं, ताकि हमें लाइक माइनस माइनस नेग्लेक्ट हो जाए। तो ये हो गया। अगर लाइक अभी पता चल गया कि इवन होने से हम हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा निगेटिव निगेटिव, जैसे कि -4 -3 ऐसा रहा, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो लाइक दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऑड होने से क्या होता है कि
सेकेंड -1 -3 -4। ऐसा सिचुएशन में होता है कि एक माइनस रह जाता है, क्योंकि हम हमेशा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लाइक इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा। तो हमें चूज करना होगा कि हमें किस में माइनस रखना है। तो इस सिचुएशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन के लिए हाँ, तो इस सिचुएशन के लिए इन दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो ऑड नंबर के लिए हमेशा एक रह ही जाएगा, और वो जो रह जाएगा हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि मतलब हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में रह जाए। तो क्या होगा कि हमारा सबसे कम एलिमेंट माइनस होगा, मतलब कम वैल्यू माइनस निगेटिव में जाएगा। तो हमें क्या करना था कि इसमें क्वेश्चन में कि बेसिकली निगेटिव वैल्यूज कितना है ढूंढना था। अगर वो ऑड है तो एक माइनस रह जाएगा, अगर इवन है तो हमेशा सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि माइनस को प्रोपेगेट करके एक जोन बना देंगे। तो वो तो हमेशा लाइक अगर निगेटिव वैल्यूज यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज इवन हुआ तो सम या आंसर हो जाएगा, मतलब पूरा एरे का सम निगेटिव को हटा के, लाइक सब निगेटिव को हटा के। अगर इफ हमें एक भी हमारा मतलब नेगेटिव ऑड में हुआ, नेगेटिव का काउंट ऑड हुआ, तो हमारा एक नेगेटिव हमेशा रह जाएगा, और उसको प्रोपागेट करके हम हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट वाला वैल्यू में लाएंगे। तो उससे क्या होगा कि मतलब हमारा सबसे कम वैल्यू माइनस होगा। तो क्या करेंगे कि हमारा सम में तो मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू भी इंक्लूडेड था, क्योंकि हमने पूरा एरे का सम निकाला था। तो मैंने क्या किया, 2 बार माइनस कर दिया उसको, तो उतना ही है आंसर इसका। सी एफ एंड जी एफ एक्सप्लेन कर दिया। कौन एक्सप्लेन कर रहा है फौजी? Is it visible? Is it visible? Ah, yes, yes, yes. So basically, this question is about a range query type questions. In this question, we are provided a array, and we need to handle key queries. In each query of two types. The first query have two parameters, L and R. It is basically the segment that is that we are giving, and in this segment we have to update the value of AI with the sum of the digit of AI. And in the second type of operation, we are given the index basically, and we have to output the index after having the operation that had been gone through that basically that element. So basically, what we have done here basically is I have used here
one type of data structure called PVDS. In this data structure, basically, in this data structure, it is like a multi-set. We can use it as a multi-set. And in this, the advantage of the data structure is we can actually find the number of elements lower than the query element in just log of n. So I'm just trying to do with this. So basically, in this in my code, I have just defined a function here, and this function here returns the value of the count of the digit, means the sum of the digits of the value. Now I have basically kept here a map of vector, and in this vector I have basically push here the value of successive iteration of the numbers. For example, mm, um, for example, the number 420. So I have successfully here drawn in the first in the array the 420, then in the next 4 plus 2 plus 10, 6, and then for the 6, the and next one is also 6. Okay. So for any of the element in my array, I have I have 3 to 4 successive iterations, which tell us that after having certain number of operation, what will be the value of the particular array. Now doing PVDS, like PVDS. So basically, and this we have taken query. So my approach is to see the number of prefix left number of prefix left and the number of prefix right that had come till now. So basically, if we have the query of type 1, so we just get the input of L and R, and just we insert it in one PVDS. We insert only the left elements, and one we just insert the right. So basically, it is like an opening bracket and closing bracket. It's like basically the opening bracket and closing bracket. So I have to just now find, if I have to find the number of iteration that has gone through in particular segment. For example, like this, for this segment, I have to just know the number of opening and closing bracket, and the difference of the number of opening and closing brackets will just give me the number of iterations that have been gone through this element. So for here, if I have query of type 2, then I will just tell that just in the number 1, I will just keep the number of opening brackets, like number of L that have been gone through a till now in the prefix of the array. And in the num2, I will just keep the closing brackets. So on difference of this, I will just get the number of opening brackets that have the number of closing brackets that have been gone, that have been neutralized by the opening brackets. So this int k will just give me the number of active L, the number of active ranges that are present till now. So if my k is 0, that means no active ranges are present till ith element. So then I just have to return the value. I just have to return the sum of the digits of the original one. If it is 1, then I have to do one operation and then return. So I have previously told that I have stored in my map of vector. So like this, I have for safety, I have just given two extra. But it just only need k is equal to 2 or 2, but I've just given extra. So yes, like this, I have done this. Let's see. Yes, yes. Uh, अच्छा, okay, I'll share the screen. Agres, you close your screen.
Can anyone confirm if the screen is being shared or not? Hello. It is not being shared. Okay. Is my screen visible now? Yes. Okay. So as Agras explained the questions, what we have to find is we have two queries. In one query, we have to update the value of AI to the sum of digits of AI, and in the second query, we just have to output the number of that particular index. So I use segment for this, segmented lazy propagation. It can be done without lazy propagation also because the operations are commutative. But since I had a template, so I just did simply use lazy propagation. So here what matters is like how many times for each index we have done the update operation. That matters because suppose like our number is 9 nines. Okay, like so in that case when we do once an update, our number will become 81. Then 81 will become 9, and after 9 it will keep on repeating. So the main observation is that this number of update is what we require. So what I'm doing is in the segment tree, I'm storing the number of operations, number of update operations done on the particular index. In each node, we are storing the number of operation in that done in that range. So the segment tree implementation is the general segment implementation with lazy propagation. The operations is simply a plus equal to b, and merging of node is b plus c. Nothing, we are just storing the number of updates done in the specific range. That is our, on that basis, we are making our segment tree. So that is all almost where we are like when the type is 1, we are just modifying. Modify is a function where we in the range we add the +1 to the whole range, indicating that there has been done one operation in that range. And while printing, like when the type is true, we just need the index. And since the segment tree is like 0 based, we have to do L minus minus and R minus minus, and here also X minus minus. Here we are getting this temp variable is storing basically how many number of update operations are being done in that for that particular index X. So here we are saving the initial value as v and the previous as 0, just to like keep a like since as I said there can be many number of updates because there are like 10 power 5 queries, I guess. Yeah, almost it can be 10 power 5 queries. So if we keep on doing the like this temp can be as uses 10 power 5. So if we directly give like while temp temp minus minus just that condition, it can go 10 power 5 times. In such cases, our code will give TLE. So as we observed at first that the maximum number of updates on per index can be maximum number of like at most like 4 or 5, max to max 4. So that's why we are storing a previous. What was the previous value? So because once the value starts becoming same, like suppose the value becomes 6, then after again and again it will come 6 only. So I'm just checking that previous is the current value same as the previous value. That is why we are storing this previous variable, and then simple a while loop. We are finding out the sum of the digits in the number, and then we are just assigning it. And once they become same, we will like break the while loop, or if the temp variable is done, like number of updates are done, then the while loop will break and we'll simply output the v. So that's all about this code. It's like a simple standard segmentary question with lazy propagation. It can also be done using normal segmentary without using lazy propagation by just updating the lower index by plus x and the right index by minus x. There is like a good video, I guess, in the CF edu section. Like those who want to know more about it, you guys can go here and watch the segmentary videos. So that was all about question number F. Is there any doubt? So like anyone?
If anyone has a doubt. If not, we will move to question G1. Okay, so let's talk about question G1. This is so in question G1, what we have said is that there are points, there is a number line with points 0 to n, and there are teleporters located on the points 1, 2, 3, 4, 5, 6 till n. And each point I, there we have like three options. Either we move left by 1 unit and it will cost us 1 coin, or we will move by right 1 unit, it will cost us another 1 coin. And we can also use the teleporter present at the point I. If it exists, then we will it costs us AI coins. As a result, we will move back to point 0. So basically, if we come across a teleporter and if we use it, then we will move to point 0 with the cost of AI coins. That's it. And once we use the teleporter, we can't use it again and again. So basically, we can use the teleporter just once. So we are given the number of coins initially we have. Here we are supposed to output the maximum number of teleporters we can use, and we are initially given the number of coins. So the logic is simple here. The thing to observe is that in the given array, like suppose in this array 150 to 13, see if we use this 52, we'll come back again to 0. Then again we'll move like we'll use 1 coin to move ahead. So what is this 1 coin signifying? It's basically the index of these elements: 100, 15, 52, 13, 6, 9, 4, 135. These index to come to this point, the index, like this is the second number, right? Not the index, the position. This is the position, right? So for coming from 0 to this number, to use this teleporter, we'll need this position plus the value AI. So for this we'll need 54. Like for this we will need 16 coins. For this we will need 10 coins. So basically we can just ignore the fact that we are moving back to the 0. Instead we just know to come to this teleporter how much coins we need. Because we are starting from 0, it's like really simple. You can think this question as like how many teleporters we can visit, in not thinking that we are going to teleport or something. Just how many teleporters we are going to visit using the coins we have. So I'll show you the code. So the code is something like this. We are taking the input first array, and then we are simply adding the in position of that element. We are doing this to find the cost. So basically now our A vector is consisting of the cost to come to the teleporter point. Then we are sorting on, because we have to visit maximum number of teleporters. We have the limited number of coins. So we want to visit all the teleporters with minimum number of coins. So we will start from 0th index and try to visit every teleporters that is possible. Initially we are given m points. So like I am storing the number of coins